Now let's see the provincial governments which happened, and this particular era is known as the Congress tyranny. Congress tyranny कह लें इसे, ये Congress rule कह लें, बात एक ही है. From 1937 till 39, Congress started to practice their own rule in the country, in the provinces. So Congress started to make the policies like the educational policies, and these policies included the first one known as the Wardha scheme. Wardha is the name of a place where this scheme was launched. And according to this scheme, the picture of Gandhi was placed in every school, and the students were required to go before the picture of Gandhi after every assembly. So Muslims felt that this was a kind of polytheism being practiced by students in the schools. So Muslims forbade their children to go to schools. मुसलमानों की नजर में ये एक ऐसा काम था जैसे कि शिर्क हो रहा है, क्योंकि मुसलमानों के लिए सिर्फ अल्लाह के आगे झुक सकते हैं और किसी और इंसान के आगे या किसी के भी आगे नहीं आप इस तरीके से झुक सकते. Moreover, the Muslim League criticized that the Congress was teaching outdated curriculum. Outdated curriculum का मतलब क्या है कि कांग्रेस पुराने वक्तों की तालीम दे रही है, नए जमाने की तालीम नहीं दे रही. फॉर एग्जाम्पल, the spinning of cotton in the schools was being taught manually. मैनुअली पढ़ाया जाता था कि किस तरीके से स्पिनिंग ऑफ कॉटन की जाती है. मशीन्स का दौर था, मशीन से नहीं सिखाया जा रहा था. तो मुस्लिम लीग ने इस चीज को भी क्रिटिसाइज किया कि ऐसा काम क्यों पढ़ाया जा रहा है जो कि अब आउटडेटेड हो चुका है. The Congress also made another policy which was known as the Vidya Mandir scheme. Now Vidya means education and Mandir means temple. So this was the scheme of temple education. एंड देयर इज नो हार्म इन दैट. इसके अंदर कोई बुराई नहीं है, लेकिन बुराई इस तरीके से है क्योंकि मुसलमान अपोजिशन में थे, तो इसलिए मुसलमान इसके अगेंस्ट थे. अब विद्या मंदिर स्कीम क्या थी कि भाई देखो, अगर जब ईस्ट इंडिया कंपनी वाले हिंदुस्तान आए थे तो वो अपने स्कूल्स, अपनी क्रिश्चियन मिशनरीज को लेकर आए थे, और उनके अपने स्कूल्स होते थे यहाँ पर जहाँ पे वो बाइबल पढ़ाते थे, चर्च की एजुकेशन देते थे. इसी तरीके से अब जो गवर्नमेंट है वो किसकी है? वो हिंदुओं की गवर्नमेंट है, तो हिंदू जाहिर से बात है अपनी रिलीजियस चीजों को ही पढ़ाएंगे यहाँ पर. बट द मुस्लिम्स फाउंड अ पॉइंट टू क्रिटिसाइज कि ये जो आप चीज पढ़ा रहे हो, दिस इज अ वे टू कन्वर्ट आवर चिल्ड्रन इनटू हिंदुइज्म, एंड सो द मुस्लिम्स वर अगेंस्ट सच पॉलिसीज ऑफ कांग्रेस. Moreover, during this time there were so many religious atrocities being carried out by the Hindus. For example, there was ban on azan on several states. There was ban on slaughter of cows on several states. And moreover, the Hindus used to play drums and bugles or flutes outside the mosques at the time of azan and namaz. नमाज के टाइम पे, अजान के टाइम पर खास तौर पे ढोल बाजे बजाना शुरू कर देते थे हिंदू, ताकि मुसलमानों की नमाज डिस्टर्ब हो जाए. Moreover, there were occasions in which they threw pig inside the mosque or during the congregation of the Muslims. Especially, there were two incidents of ईद प्रेयर्स. दो ऐसे वाकयात थे जिसमें मुसलमान ईद की नमाज के लिए ईदगाह में जमा हुए हुए नमाज पढ़ रहे थे, तो वहां पर सुअर को फेंक दिया गया था ताकि मुसलमानों की नमाज खराब हो जाए. Moreover, the Hindus had also made Bande Mataram a song as the national anthem of India. इसे national anthem का दर्जा दे दिया गया था. Now, what was Bande Mataram? Bande Mataram was a song made out of a poem written by Bengali nationalists, और जिसके मुताबिक there were derogatory and insulting verses regarding the Muslims, and this also praised the lyrics also praised the Hindu goddesses. इसके अंदर ऐसे अल्फाज थे जिसमें, yes you're right, Bankim Chatterjee was the name of the person who wrote this song. तो इसके अंदर ऐसे अल्फाज थे, ऐसे वर्सेस थे जिसके मुताबिक मुसलमानों को बे ऑफ बंगाल में फेंक दिया जाए, या इनकी जो हिंदू गॉडेसेस हैं उनकी वर्शिप की जाए, वो बहुत सुप्रीम है. मुसलमानों के लिए डेरोगेटरी थे और हिंदू गॉडेसेस को प्रेस किया जा रहा था. तो मुसलमानों की नजर में दिस वाज अ सॉन्ग व्हिच वाज वेरी ऑफेंसिव बिकॉज इट वाज सung इन एवरी पॉलिटिकल मीटिंग. तो किसी भी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल मीटिंग या सेशन ऑफ द असेंबली से पहले ये सॉन्ग को गाया जाता था. मुस्लिम्स फाउंड इट वेरी ऑफेंसिव. Moreover, Hindi was declared as the national language of India. इसे national language, इसे official language का दर्जा दे दिया गया था. तो वही बात है जो हम पहले करते आए हैं कि हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी 1863 से चल रही थी. फाइनली जब हिंदुओं को अपनी गवर्नमेंट मिली तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने हिंदी जबान को नेशनल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया. And lastly, there was a lot of racial discrimination between the Hindus and Muslims at that time. For example, उस जमाने में मुसलमानों को हिंदूज किसी भी गवर्नमेंट की अच्छी अपॉर्चुनिटी को हासिल नहीं करने देते थे, और हिंदुओं को हमेशा प्रेफर किया जाता था ओवर द मुस्लिम्स. साथ ही साथ जो उस जमाने में जजेस होते थे, जो कोर्ट्स होते थे,
वो भी बड़े बायस्ड होते थे। बायस्ड इस तरीके से होते थे कि अगर मुसलमान और हिंदू का क्लैश होता था, they used to favor the Hindus and they used to punish the Muslims. And this is why the Congress rule is known as the Congress tyranny. It was the most hated rule by the Muslim community of India. But this Congress rule ended in 1939, and this ended because of the beginning of World War II. Because of the beginning of World War II, the British decided to go into the war against Germany, and they also decided that India would go on war along with Britain. But the Congress ministries resigned in protest because the Congress ministries believed that they were not consulted, which is kind of an insult for the Indians. कांग्रेस ने 11 के 11 प्रोविंसेस से जहां जहां उनके मिनिस्टर थे उन सब से रिजाइन कर दिया, इस बेस के ऊपर कि कांग्रेस से या इंडिया वालों से मशवरा क्यों नहीं किया गया whether India wants to become the part of the war or not. And so they resigned, but their resignation came as a blessing in disguise for the Muslim community, and Muslims celebrated the day of deliverance. Deliverance का मतलब होता है नजात. So it was Yawm Najat for the Muslims of that time, because finally the tyranny of Congress was over. Muslims led by Muhammad Ali Jinnah, and at the call of Muhammad Ali Jinnah, celebrated this day where they offered the prayers of thanksgiving and also distributed sweets and held parties. और मुसलमानों ने मिठाइयाँ तकसीम की, दावतें रखी, शुक्राने के नवाफिल पढ़े कि अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेस का रूल खत्म हो गया. दिस ऑफेंडेड द कांग्रेस एज वेल, और इससे मुसलमानों के और हिंदुओं के ताल्लुकात मजीद खराब से खराब होते गए.